All right, a fresh row over bulldozer campaign in Delhi now emerges. This comes after Delhi's South MCD Mayor Mukesh Suryan has called for a big crackdown on Rohingya and Bangladeshi encroachments in the national capital, claiming that several government areas in Shaheen Bagh are being illegally occupied. The mayor has also said that encroachers have been living there since years in Delhi's Kalindi Kunj and Sarita Vihar colonies illegally. Remember, the Shaheen Bagh area became the epicenter of the anti-CAA protests. 2 years ago, a fresh anti-encroachment inspection drive is set to be carried out today by the civic body, SDMC, in 3 separate wards, namely Sarita Vihar, Madanpur Khadar and Jaitpur in Delhi. Politics showdown explodes as Delhi South MCD mayor hits at the Aam Aadmi Party as well as the Congress for giving entry to infiltrators in the national capital, alleging that AAP MLAs are giving shelter and water to Bangladeshis and Rohingyas despite fixing the water shortage within the Delhi state. Supreme Court has now ordered to maintain status quo on Jahangirpuri demolition case last week. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां बुलडोजर की जरूरत है बुलडोजर चलेगा और सरकारी जमीन पर जब इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती है तो सबको मालूम है बुलडोजर से ही वो अतिक्रमण हटाया जाता है। दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है लेकिन रोहिंग्यों को पानी देने की आम आदमी पार्टी की ड्यूटी है। आज दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, दिल्ली के लोगों को बिजली मिल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रैन बसेरों में रख रही है, उनको खाना भी देने का काम कर रही है, उनको बिजली पानी मुफ्त देने का काम कर रही है। तो ये कौन सी राजनीति है, कौन से देशभक्त है? All right, here's a massive bulldozer campaign that was carried out in Delhi as well. Remember, we're looking at Jahangirpuri, where the riots took place. Soon after the riots, the MCD had carried out a huge anti-encroachment drive in the area. Now we're looking at the bulldozer battle extending to areas that saw the anti-CAA protests snowball. Shaheen Bagh now, also one of those areas where the MCD is mulling over a bulldozer drive to bring down encroached buildings and establishments along those areas. In fact, remember, we're looking at BJP-ruled states, particularly carrying out a massive bulldozer drive across areas that saw huge clashes. In fact, communal clashes that erupted in many areas across the country in different BJP-ruled states. We are looking at shelter and water to Bangladeshis and Rohingyas now that they're mulling over cutting off in several areas that have been encroached. The Supreme Court has ordered to maintain status quo on Jahangirpuri demolition case in the meanwhile last week. Here you have a fresh row that's erupted over bulldozer campaign in Delhi that emerges. This comes after Delhi's South MCD Mayor Mukesh Suryan calling for a big crackdown on Rohingya and Bangladeshi encroachments in the national capital, claiming that several government areas in Shaheen Bagh are being illegally occupied. The mayor has also said that encroachers have been living since years in Delhi's Kalindi Kunj and Sarita Vihar colonies illegally. Remember, the Shaheen Bagh area becomes the epicenter of anti-CAA protests. 2 years ago, a fresh anti-encroachment inspection drive is now being carried out. In fact, it's all set to be carried out today by the civic body, the SDMC, in 3 separate wards, namely Sarita Vihar, Madanpur Khadar and Jaitpur in Delhi. This politics only brewing over bulldozers being used in several areas. On one hand, you have the MCD carrying out a bulldozer drive in Jahangirpuri area, which the Supreme Court has put a stay to. Now the same MCD mulling over Shaheen Bagh. Let me cut across to Himanshu Mishra, who is right now in Shaheen Bagh, to bring us more on that. Himanshu, Shaheen Bagh, ये एक जो area था, जहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, एंटी-सीए प्रोटेस्ट वहीं पर शुरू हुआ था, क्लैशेस भी हुए थे. यहाँ पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव एमसीडी सोच रही है, एक इंस्पेक्शन तैयार कर रही है आज शाम को. यही एरिया क्यों? बाकी पूरी दिल्ली छोड़ के शाहीन बाग के पास एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसके पहले मैं ये सोचना होगा कि ये शुरू कब हुआ और किन परिस्थितियों में शुरू हुआ. ये शुरू हुआ जहांगीरपुरी में, जो
शनिवार को जो हिंसा हुई थी वहां पर हनुमान जयंती के दिन, उसके बाद वहां पर एनक्रोचमेंट शुरू हुआ और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनके तरफ से जो लेटर लिखा गया था, उसके बाद एमसीडी जो है वो एक्शन में आती हुई नजर आई है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं नबीला, ये वही सड़क है जिसपे सीए के प्रोटेस्ट यहां पर किए गए थे। ये रोड पूरी तरीके से करीब 100 दिन तक बंद था और उसके बाद ये पूरी मार्केट बंद थी। आज जो यहां पर आने वाले हैं वो इसी जगह पर सबसे पहले पहुंचेंगे। जो एमसीडी के अधिकारी हैं, 12:30 बजे के पास उनका टाइम है। 12:30 बजे जब वो पहुंचेंगे तो ये अंदर का जो पूरा इलाका है, यहां पर वो जाकर के देखेंगे कि क्या क्या इलाके जो है वहां पर अतिक्रमण किया गया है, क्या प्लॉटिंग भी अंदर की गई है, गलत तरीके से प्लॉटिंग की गई है। और साथ ही साथ जब ये पूरा सर्वे चलेगा तो ये देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर बांग्लादेशी हैं, क्या रोहिंग्यास भी यहाँ पर हैं जो अवैध तरीके से उन्होंने कोई एनक्रोचमेंट किया हुआ है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, सर्वे किया जाएगा, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जब जिस इलाके में, किस इलाके में जो ये ड्राइव चलानी होगी तो वहां पर सुरक्षा की कितनी जिम्मेदारी है, किस तरीके से उन्हें पुलिस की मदद चाहिए होगी, तो वो सारी जब तैयारियां हो जाएंगी उसके बाद एमसीडी ये निर्णय लेगी और स्पेसिफिक एकदम ये टारगेटेड करना चाहते हैं। यही वजह है कि सर्वे के लिए जो तमाम अधिकारी हैं वो पहले उन इलाके में पहुंच रहे हैं और सर्वे करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किन किन इलाकों में एनक्रोचमेंट है। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इस पूरे इलाके में एनक्रोचमेंट है, कबाड़ का भी काम है। हमने कुछ लोगों से बात की नबीला, उनका ये कहना था कि जैसे वो रोड पर जो काम कर रहे हैं, कई बार उनका जुर्माना भी हुआ है, लेकिन जब एमसीडी के अधिकारी आते हैं तो वो हट जाते हैं और वो वापस फिर वहीं पर आके बैठ जाते हैं। तो ये ड्राइव समय समय पर चलती रही है, लेकिन इस वक्त ये जो ड्राइव शुरू हुई है ये जहांगीरपुरी हिंसा के बाद शुरू हुई है। सबसे पहले वहां पर अतिक्रमण हटाया गया था और उसके बाद ये शुरू हुई है और इसी वजह से इसको लेकर के राजनीति भी देखने को मिल रही है। नबीला जी, थैंक यू वेरी मच हिमांशु। मगर यहाँ पर जो शाहीन बाग एरिया है वहाँ पर बहुत सारे इलीगल एस्टैब्लिशमेंट्स है। ये बात तो सही है कि वहाँ पर एनक्रोचमेंट बहुत सारे एनक्रोचमेंट्स है और ये एमसीडी को पहले करना चाहिए था। ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स अभी जो फैल रहा है, ये अभी जो कर रहे हैं उसका टाइमिंग का क्वेश्चन है। अब बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो कोई भी अगर एनक्रोचमेंट होता है तो जो भी एनक्रोचमेंट इस पूरे इलाके में हुआ है, क्या प्रशासन उससे पूरी तरीके से अनजान था? क्या सरकार की अगर किसी ज़मीन पर कभी कब्जा होता है तो उस इलाके के पुलिस वाले पूरी तरीके से अनजान होते हैं? नहीं, ये संभव ही नहीं है। सबको जानकारी में होती है, सब कुछ आराम से चलता रहता है और अचानक से अगर कोई ऐसी बात होती है तो प्रशासन एक्शन में आता है और उसके बाद लोगों का विरोध भी उन्हें देखना पड़ता है। क्योंकि इस इलाके में जब हम कई जगहों पर गए तो उनका कहना है कि कई सालों से वो लगातार इसी तरीके से काम करते चले आ रहे हैं, अपना धंधा चलाते चले आ रहे हैं। तो अचानक से जब ये होता है और जब उन्हें वहां पर बसने दिया जाता है, बसते वक्त उनको नहीं रोका जाता, शुरुआत में उनको नहीं रोका जाता, तो फिर आखिरी में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जिन अधिकारियों की देखरेख में या जिनकी उपस्थिति में इस तरीके के एनक्रोचमेंट होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। इस बार जो कुछ भी ड्राइव चल रहा है, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, उसके बाद वहां पर एनक्रोचमेंट हटाया गया और फिर वो अब बढ़ते बढ़ते इस पूरे खास तौर से साउथ ईस्ट जो दिल्ली का इलाका है, मदनपुर खादर, जैतपुर, इसके अलावा शाहीन बाग, सरता विहार का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो टीमें आने वाली हैं, यही वजह है कि पॉलिटिक्स इस पूरे मामले में एंटर कर चुका है। Stay with us. I'm going to quickly cut across to Kumar Kunal, who's also joining us from Badarpur. Kumar, we're looking at this anti-encroachment drive that the MCD is mulling over. Most of these areas are those areas, the hotbeds where we saw communal clashes right after the CAA protests ensued. Whole of 2020, we saw a scenario where those areas, particularly Shaheen Bagh, Badarpur, huge protests against the CAA ruling. Now, exactly those areas, the MCD is mulling over a bulldozer drive. What's the reason for them to carry out this anti-encroachment drive now at this point, when there are several questions raised on the authenticity or the intent behind this anti-encroachment drive itself? Nabila, look, almost the tenure of the current MCD is also over, and just before the unification of the MCD, earlier it was
trifurcated MCD. Right now we are at the Badarpur site where just a few minutes ago Mayor Mukesh Suryan has done a survey. I can show you some pictures right here. These are the buildings which are on the O-zone area. I will explain you for the what is actually an O-zone is. O-zone is the area which is in the Yamuna riverbed and these construction, these houses are on these O-zone areas. And what are the court instruction, what are the DD's instruction, that there should not be any kind of construction which is permitted on the O-zone. So actually what MCD is trying to tell, that since these constructions are being done on the O-zone areas, so these needed to be demolished, and that's why this survey is taking place from Madanpur Khadar, from Badarpur towards Shaheen Bagh. But actually we asked the mayor that will they take action against all those who are residing on the O-zone, in the O-zone colonies, or will they take action only against the illegal immigrants like Bangladeshis and Rohingyas? So Mukesh Suryan was not quite clear on this. Actually, the legal position is this, that on O-zone no one can reside. Here are some local residents. I can take you to them. ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, तो आपको लगता है कि ये आप लोग गलत तरीके से रह रहे हैं? कहा जा रहा है रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। यहाँ कोई बंगाली नहीं है, यहाँ कोई रोहिंग्या नहीं है, यहाँ कोई अनऑथराइज कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। सब प्रशासन की नजर में, एमसीडी की नजर में कंस्ट्रक्शन होता। सब लोग अपने मकान बना रहे हैं, यहाँ कोई ऑथराइज नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स है, दोहिजपन है, और कुछ भी नहीं है यहाँ। कोई नहीं है। आप लोग भी कितने सालों से रह रहे हैं? हमें लगभग यहाँ 18 साल हो गए, 18 से 20 साल। So these are the local residents, and they are telling that they are residing here for years, 18 to 20 years. Someone even they are telling that whatever is being constructed, even the local councillor, local MCD officers, they are all aware about these constructions. Still, no action were taken when the constructions were coming up. Why this kind of survey is taking place when an incident at Jahagirpuri took place? Even the areas which are being targeted specifically, like Shaheen Bagh, like these areas where Muslim population are in majority, so why these areas are only being targeted? So the intention is being questioned by the local residents, and they are actually asking that why there were no action when they were making their houses at this O-zone area. So obviously they will ask these questions, but MCD has some other plans. All right, thank you very much, Kumar Kunal, for joining us with those details. MCD now going to be carrying out a huge assessment on encroachments along those areas where we saw massive CAA protests breaking out 2 years ago.